Hello and a very warm welcome to We Women Want. This is a special show for women, by women and celebrating women. On our show we'll have guests जो होंगे जो women achievers हैं, जिन्होंने खुद अपना नाम हासिल करा है, women of substance. इनको जागीर में नहीं मिला है, ना ये जैसे कि पॉलिटिक्स में ज़्यादातर डायनेस्ट होते हैं. ये अपने आप अपने मजबूत पे खड़े हुए हैं on their own hard work and we are going to be celebrating their success. और उनसे थोड़ी उनकी कहानियाँ सुनते हैं because आपने इन सब के नाम सुने होंगे. They are brand names, they are labels. लेकिन उनकी जो अंदरूनी कहानी है, कैसे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उनकी क्या पसंद है, उनके क्या पर्सनल लाइफ में क्या क्या उनके हार्डशिप्स हैं, थोड़ा सा हम ये शो है जैसे कि आपको लगे बिल्कुल आप ही उनके साथ बात करें. जो आपके सवाल हैं वो मेरे पास हैं और वही हम उनसे बातचीत करेंगे. सो वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो. और साथ हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच. आज साथ हमारे साथ हैं रीना ढाका. शी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन फैशन. आई थिंक फ्रॉम द लेट 80s 90s उन्होंने, जब फैशन वाज नोन, जो इंटरनेशनल ब्रांड था, तो तब आई थी. उन्होंने इंडिया में बिल्कुल फैशन बनाया, एक्सेसिबल बनाया ताकि आप हम सब भी फैशन पहन सकें. उनको निकनेम उनका है डोना कैरन ऑफ द ईस्ट, लेकिन वो ईस्ट एंड वेस्ट का बड़ा अच्छा ब्लेंड करती हैं. और उनसे कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या डिफ़िकल्टी इंडस्ट्री में हुई और उन्होंने आज इस कब तक पहुँची, पर्सनल लाइफ में क्या था, सब उनसे हम बातचीत करेंगे. और हमारे साथ हैं अंजुल भंडारी. शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फैशन नेम. बॉलीवुड स्टार्स काफ़ी उनके जो आप बिग स्क्रीन पे देखते हैं, दोनों के इनफैक्ट आउटफिट्स आर वॉर्न ओवर देयर. इनका सिग्नेचर है चिकनकारी वर्क, कामदानी वर्क. उनका ट्रेडिशनल अवध स्टाइल है वो, पर वो कहती हैं कि वो जो ब्राइडल वेयर भी बनाती हैं, पर जो पुराना स्टाइल था ना, हैवी ब्राइडल वेयर, द जरदोजी वर्क, दैट इज़ समथिंग शी इज सेइंग पीपल शुड वेयर लाइट वर्क. जो ब्राइड्स हो, दे शुड बी मेड कंफर्टेबल. अ ब्राइड शुड ऑल्सो बी एबल टू dance at a wedding, should also be able to revisit those clothes and wear them again and again. So we have people who have brought fashion to us, both of you. Thank you so much for this conversation. Thank you. In fact, special occasion for me is to have you here. Reena, I begin with you first. You know, little bit through you, I want to go through the fashion history of India because you were one of the first movers really. और उस समय male dominated field में women ने कैसे आपने किया? Actually, जैसे मैं इन लड़कियों को कह रही थी कि I've been there. मैं बहुत ही छोटी थी when I started in fashion. I had just finished class 10th and I came to Delhi from Chandigarh and I started up with the polytechnic here. जब बारिश होती थी हमारी छुट्टी हो जाती थी पर जो भी है, it got us into that journey and I did my graduation by correspondence and I did the first work ever NIFT when NIFT came from FIT in New York. I did that first workshop. I also further went on to do pattern making and all that in London at Trent Polytechnic. और मेरे फर्स्ट गुरु थे एक डेनिश डिज़ाइनर. उनका नाम था, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग, आई ऑलवेज कॉल्ड हिम इवन, बट इज़ आइवन, आई थिंक आइवन घुंडाल. और उनका ब्रांड था लिनिया एस. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. उन्होंने सबसे बहुत ज़रूरी ये चीज़ सीखी कि ये बहुत फ्लीटिंग इंडस्ट्री है. आज हम यहाँ हैं, कल हम बस like dust particles before the wind बन जाएंगे, जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं. 30 साल कर दिया आपने यहाँ, so not so fleeting for you. Yeah, but what I'm saying is हर आदमी का एक पीक सा होता है. तो yes, मेरी बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं इस बात में कि फैशन का जो एक पीक था ना, वो मैं और मेरे कुछ कंटेम्प्रेरीज ने एक बार देखा था. अब एक नया पीक है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, न्यू टैलेंटेड लोग हैं. आई मीन द टैलेंट इज़ इमेंस. जैसे आपने कहा कि अब साड़ी को लाइट होना चाहिए, यू नो, इट इज़ माई बिगेस्ट डिज़ायर. पहले दे वर नेवर वेयरिंग सच हेवी क्लोथ्स, बट नाउ द ब्राइड्स वांट ड्रामा, दे वांट the whole Bridgerton has gotten mixed up with our, as you call, Bridgerton brides. Yes, absolutely. You have lycra का डिज़ाइन किया था. You mixed क्योंकि you did not get what you wanted. No, पर उन दिनों में फैशन कुछ था ही नहीं. इंडियन कपड़े नहीं बनाए हमने शुरू में. 90s में जब मैं आई तब हम लोग वेस्टर्न कपड़ों में गए. एंड आई वेंट इनटू अ मीडियम, जो फैशन जानते इसमें ना स्ट्रेच कपड़ा तब मिलता नहीं था. यहाँ हमको सब कुछ स्मगल जैसे करना पड़ता था. वो जो एक ग्रीन चैनल से हम चुपचाप से अपना लाते थे लाइक्रा इधर उधर से खोज खाज के.
फिर एक दिन हम लाइक्रा के ओनर को इंडिया में ही मिले। अच्छा। उन्होंने वो कंपनी डुपॉन्ट किसी और को, आई थिंक नाउ अनदर, आई डोंट सडनली द फैक्ट इज नॉट कमिंग बट आई नो द नेम। वो एक तार है इलास्टिक की बेसिकली। तो मैंने फिर वो लाइक्रा हर चीज़ में घुसाया, खादी में घुसाया, जब भी वीविंग से हुआ उसमें घुसाया। मैं बहुत सारा लुधियाना में काम करा टू गेट दैट निटेड इफेक्ट। तो वो सब करा। आई रिमेंबर टू I had to it in the 90s when I was going to Ludhiana. So I was such a young girl and we only wore Western clothes or whatever, jeans and tops. Whatever the fashion is today is actually that day's fashion. In reality, वापस आ गया है। तो I was married also young but not 16. And I remember my mother said, तुम लुधियाना जा रहे हो? You can't go like this. First they sent a maid with me, then they sent me in a salwar suit and I had none. That was one sukki si thing. So I borrowed my mother-in-law's and I went. And there they looked down on me in Ludhiana. Sure. They said, "तुसी abroad नहीं गए हो?" I'm like, what? Yeah, like why? It was very important for me to look Western. अच्छा. So from that day to today, India, we've come a long way, where we wear Indian clothes with pride. Absolutely. Where we want to be in Indian clothes, where Indian clothes are equally fashionable, whether you opt to be in a sari or in a Western outfit. It is no more a stigma. At that time, it sort of divided the urban from the traditional, I would say, or the new urban, as we say it. जो mom shaming होती है कि working mothers अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं। Mom shaming तो हर घर में, हर माँ के साथ होगी। पर अग्नि परीक्षा होगी, मतलब सीता को भी अग्नि परीक्षा करनी पड़ी रीना। रोज होती है। रोज होती है। मैंने कहा एक औरत को तो हर रोज हर जगह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पर आई थिंक जो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है कि जब मेरा काम बहुत बड़ा या फैला हुआ था एक टाइम पे, और वो जैसे मेरे वर्क करियर की पीक भी थी और फैशन उस टाइम हर जगह से तुम्हें खींच रहा था। तब उससे पहले शाहरुख खान वगैरह और मिस ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड नहीं बने थे, वो डांस नहीं कर रहे थे इंटरनेशनली। हमें कोई साउथ अफ्रीका बुला रहे, नई नॉवल चीज़ खुली थी इंडियन फैशन, तो दे वर इन्वाइटिंग अस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई रियली डिड ट्रैवल द वर्ल्ड, बट माई चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल। द फर्स्ट वन आई कैरीड अलॉन्ग, द सेकेंड वन I just couldn't take 2 boys, but मेरे अंदर में जो वो एक पेरेंट की एंग्जाइटी होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी, आई थिंक सुबह अगर निकलो उठ के तो वो 3:30-4 बजे तक मैं बहुत एंक्शियस होती थी। एंड आई रिमेंबर उस टाइम अगर मैंने खाना नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करी, व्हाई डू आई बिहेव बैडली इन दैट टाइम, आई कांट हैंडल एनी टफ सिचुएशन। आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ आइदर इन टीयर्स और स्क्रीमिंग एट समवन। आई कैन हैंडल दैट सेम सिचुएशन विदाउट स्क्रीमिंग, बट मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही थी? बिकॉज आई रियलाइज आई हैड सिवियर सेपरेशन एंग्जाइटी और आई नेवर अलाउड माई सेल्फ टू गेट हंग्री। तो मैं डाइट्स के लिए इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि नहीं करो डाइट प्लीज़, बिकॉज काम करती हुई औरत के लिए दैट मोमेंट ऑफ इमोशन इज़ वेरी हार्ड टू handle, what they call hangry. Hangry. But which is what my next topic is, body shaming. क्योंकि especially आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आप थिन मॉडल्स प्रमोट करते हैं, फैशन विच ओनली। रीना, आप थोड़ा अग्नि परीक्षा, पहले तो आप बताइए, हम बात कर रहे थे लार्ज साइज के, ये बॉडी शेमिंग जो चल रही थी आपकी इंडस्ट्री में, उसमें आई नो यू हैव अ लार्ज साइज स्टोर आल्सो फॉर फैशन। यस। सो दरअसल जब हम आए थे फैशन में टू बी अ सैम्पल साइज, तब हमारे वर्ल्ड में एक सैम्पल साइज था। अच्छा। वो एक उसका एक पुतला डमी बनती है, वो सैम्पल पे हमारा वर्ल्ड पूरा डमी, टेलर, हम सब उसी के ऊपर सजा रहे हैं उसे फॉर अ शो, और वो पहना जाता है फ्रॉम अ मॉडल। इनफैक्ट उन दिनों में एक मॉडल को बोलना यू आर नॉट फिटिंग इज लाइक शी मे हैव इट्स द वर्ल्ड्स, उसको व्हाट शी हैज एनकाउंटर्ड विद आवर सिंपल रिमार्क वी कैन नॉट इवन फैथम। Like उसको बेचार, so many of them have suffered acutely because of these remarks कि this is not fitting you, your hips are not going, it's not going up your hips. तो उन दिनों में हमने बहुत ड्रामा और नखरा करा. I have to admit, it was what the world then there was a fixed notion. We were definitely very biased people on size, fashion as an industry. It is wrong to say we were not. And sample size was the norm, and you had to be there, and the girls were to be that hanger, and the catwalk was important. शक्ल वकल बॉलीवुड वगैरह बाद में बना है. और फिर उसके बाद मैं लंदन फैशन वीक कर रही हूँ. ठंड है, जनवरी फरवरी में बहुत बर्फ़ होती है. वहाँ पर लड़कियाँ फिश नेट्स में, पुलिस आई हुई है, प्लस
प्लस साइज की, लुकिंग गॉर्जियस, हाँ. और वहाँ पुलिस के साथ डांस और अपना शो कर रहे हैं. उस दिन मैंने सीखा, what I'm doing is wrong. This is the world and this is a fair play. And I remember आज एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल है, her name is Sakshi. I pulled her out from a crowd like you girls. She was a blogger. I said, you have to come. I was casting for my plus size show for Lakme Fashion Week for all. And मैंने कहा तुम आओ, तुम भागे आओ. She was not going to come. Today she has done more covers on every Indian big fashion magazine than any Indian model has ever. तो ऐसे world has changed today. It is all about equality. चाहे gender हो. Gender में we were all very fluid in fashion. I must say we were very fair. We were very inclusive. There was no issue. But in size we were biased. But today it is not there. रीना, थोड़ा सा bit it's a personal जो हुआ था, लेकिन if you could share your story since you also you know About woman cancer, icon, हाँ. your battle with it and what you went through थोड़ा. So cancer girls, I thought, because I have no genes of cancer fortunately, and my family, touch wood, till now from my grandmother, all have no history ever of cancer in any generation. So I never thought it would happen to me. But I don't know what it is, whether it is my lifestyle, because lack of sleep, children, stress, work, running from one city to other, those एक तरफ हम factories में literally I become like a worker. I feel I'm one of them. So I'm not wrong when I say Agnistri. Yeah, I do all the work. I'll even plug, I'll clean, I do Really? everything. Yeah, and then suddenly we are thrown into this world, which is what I try to then do. I don't take it seriously. That's about it. Because my real work, I feel, is where we are behind the scenes. And but yeah, cancer comes as a big shock. Whoever deals with it, the first part is the shock. Okay, why is it happening to me? It's not meant to happen to me. But it's not a ekdam se hone wali cheez. It's not like the closest I'd been to a hospital or a doctor was when my children were born. मेरे को तो कोई बुखार भी नहीं हुआ था. मैं अपने आप को मतलब फिट रखते हैं. हाँ, मतलब काम पे रहने के साथ I was like, I felt I could do anything. If I can do work in fashion, I can do anything. It's what I thought. It pretty much toughens you up for a lot of health. So much for saying fashion is glossy magazines. ये तो मेरे लिए eye opener है. Yes. That's not true. आपका वर्ल्ड भी इतना ही मुश्किल है because it's deadline driven. And We all are on that deadline. Yeah. Deadline means dead. मरना पड़ता है पहले. Literally it says dead पहले. Without मरे that line won't cross. And so cancer came there, and so I'm a Buddhist now. I chant. So I know in India many people practice Buddhism, but you have to deal with it. Like I have seen, cancer ka bimari is not such a hassle. It is a treatment which is killer. Then the treatment is like the world's biggest shop you've ever been into. Cancer shop, because you have so many doctors, you have so many stages in curing the cancer and its treatment, that it's one hell of a shop. But yes, mentally it is a lot of work, cancer, because you're really with the fear of death here and you face it. It's better to be surprised by it and go. But having said that, you also have been talking about preventive health checkups. Ji, preventive health checkup is very important. A person like me, working, you girls, all of us are so lazy. We postpone it. We postpone it so much. Any sign you see in your body of a change, it is important to get a checkup. It's just something, because I was so surprised. How can it happen to me? But I did have a significant change in my body shape, like shakal of the skin, you know, like a pucker. Really? That was the sign. That was my sign. And I could see it. And I'm sitting on it. I'm fully educated. I'm aware. This can mean anything. And I'm sitting on it saying, okay, next show ke baad. And then I said, okay. Then my husband just pushed me in a car. And this lovely lady who's a doctor, she opened her place for me at night. फिर मैं धक्के से वहाँ पहुँची हूँ to get this news also. And then of course I'm treated. And now I'm here with you and I'm back to life. But yes, cancer is a traumatizing experience for every person. Anyone. Anyone. I think the name is the biggest scare. No, it is the treatment which is horrible. Because you're poked with these jabs and like a zoo animal. And some of my friends have really had a worse deal than I have. So I've been quite fortunate.
So basically the thing is वर्क जैसे रीना सेज है इम्पॉर्टेंट, लेकिन वर्क मीटिंग नहीं करते रहिए, थोड़ा अपने आप पे भी. एंड विमेन एज अ टेंडेंसी वी टेंड टू पुट आवरसेल्व्स पीछे कि यू नो. बट रीना, आई हैव वन क्वेश्चन. जब आपने शुरू किया था, अब तो फैशन इज समथिंग प्राउड इंडस्ट्री टू बी इन, आपको बोला नहीं कि आप क्यों दर्जी का काम कर रही हैं? ऐसे ये क्या आप ये रोज पूछा जाता है. We are qualified दर्जी, ये मॉडलिंग इज बैड एंड यू नो तुम्हारी फोटो, एंड आई यूज्ड टू हाइड बिकॉज टू टेक अ पिक्चर वाज shaming is mild in my family. Oh my God. So I did hide and come in some magazines with Rohit Bal, and there was kind of, you know, because when you're so young, you can double as a kind of a person wearing your own product. And press was writing in papers then. It wasn't all electronic. And they were interested in us and our stories. Yes, so it was very challenging. I came once where there was a design story, and I came on the cover of India Today. So there was other designers with me, Tarun, Rohit Bal, and I was so young. I wore a pin-tucked khadi ki mini skirt and my tank top with chicken curry on stretch, done, and I put some jewel thing, and my husband saw it and he threw the magazine from one room to the other. What the hell are you thinking wearing this? And my mother saw it. I felt so relieved. She said, "You look so nice." I was just like, finally, somebody gave me a backing on that one. A woman to a woman. एंड टुडे अंजु's husband बहुत खुश होंगे कि कोई चिकनकारी पहन रही है. I know. Back then, I need to dig this out. Yeah, absolutely. My question is, annually, carbon footprint of textile industry is 1.2 billion tons. So ma'am, like inspiring figures like you, how can you promote sustainable fashion? Thank you, ma'am. Fabulous question. Absolutely, I agree. You must, this I tell you, because you talk to all the bigwigs of politics, the country's biggest men. And I put a message out, if you can, for me. I go to the biggest market, which is of textiles. It's a wholesale market here called Gandhinagar. Okay? And you have to take the metro because it's far more convenient. So I take the metro and you pass these landfill mountains. आज उनका हालत बिकॉज ऑफ द रेन पता नहीं क्या होगा. एंड फिर एक सुएज का नाला है, इतना बड़ा नाला कि फ्रॉम देयर से डबल पे, एंड इट ओवरफ्लोज लाइक अ रिवर, एंड there's little children playing there because they have no space to play. That is their home. They can't afford it. And वहाँ पर हमारा लैंडफिल है of this clothing industry का waste. And I've been, every time I pass there, न्यू पॉलिटिशियन न्यू फोटो. अभी इतने साल हो गए, आपने कहा मैं इतने साल से इंडस्ट्री में, इतने साल से मैं जा रही हूँ. हर एक का वहाँ मैं पोस्टर देखती हूँ, बट किसी ने उसका उठाने का कोशिश नहीं करा है. You know, and we as design industry, you as young people, we have many things. There are now, I work now with PETA a bit, and also with recycling. Go back to the grandma. Grandma knew how to do it. पुरानी साड़ी पैच वर्क करके रज़ाई बना दी. You know, yeah, whatever they call them, taktposh. One another thing I found at home, a very simple thing which you all can do is, reuse is one, pajamas. We don't need to throw in the bin for washing every day. And also now some people like me, I'm very happy, at least I'm trying in my own way, small, is that I refashion. Some client of mine has bought my old clothes, I will refashion. They think about the future. There is nurture, there is compassion, there is what we women want is a better, more caring world, and no one better than Rina Dhaka and Anjul Bhandari. Thank you so much, both of you. Thank you for this having conversation. us. Thank you. And for a very lovely audience, I think we must clap for the audience today. Thank you. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the Newsx YouTube channel, hit the bell icon.